नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट 1.4 देखने वाले हैं। यहाँ पे बताया है दैट नंबर रूट 2 इज शोन इन ऑन नंबर लाइन। स्टेप्स आर गिवन टू शो रूट 3 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग रूट 2। फिल इन फिल इन द बॉक्सेस प्रॉपरली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। ये एक्टिविटी है, हमें ये कंप्लीट करनी। चलो, the point Q on the number line shows the number root 2. Q on the number line is root 2. The line perpendicular to the number line is drawn through the point Q. Q से perpendicular number line drawn किए। Point R given उधर point R is at unit distance from Q on the number line. Q से यूनिट डिस्टेंस पर R नंबर लाइन पे डिनोट किया है। राइट एंगल ट्रायंगल ओ आर क्यू ऑब्टेन बाय ड्राइंग सेगमेंट ओ आर। बाद में ओ आर ड्रॉ करने के बाद सेगमेंट ओ आर ड्रॉ करने के बाद हमें ओ आर क्यू राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। उसमें लेंथ में ओ क्यू रूट 2 आता है और लेंथ क्यू आर वो यूनिट डिस्टेंस लिया है इसलिए 1 आता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंथ ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ओ क्यू स्क्वायर प्लस लेंथ क्यू आर स्क्वायर। तो लेंथ ओ क्यू कितना आया, दिया है रूट टू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यूनिट 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। लेंथ ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3, हेंस लेंथ ओ आर इज टेकिंग अंडर रूट length OR is equal to under root of 3. Draw an arc with center O and radius OR. Mark the point of intersection. Point of intersection of the line and the arc as C. In this way, the C is shown on the number line. Okay, now show the number root 5 on the number line. Show the number under root 5 on the number line. Draw a number line L. तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। So take a OP as a 2 unit. OP is a 2 unit. Draw a line M perpendicular to line L through point R. Perpendicular through point R. तो O1 through point R. Take a point Q on line M such that PQ is equal to 1 unit. Now join OQ PQ in right angle triangle OPQ. By Pythagoras theorem, length of OQ square is equal to length of OP square plus length of PQ square is equal to 2 square plus 1 square is equal to 4 plus 1 5. Length of OQ square is equal to 5. तो हमें लेंथ ऑफ ओ क्यू निकालनी है तो उसका अंडर रूट करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5। तो ये डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ 5। तो अभी हमें अंडर रूट ऑफ 5 ये लाइन यल पर डिनोट करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये ओ से क्यू तक रेडियस लेके उसको लाइन यल पे बाइसेक्ट कर देना है और बाइसेक्ट करने के बाद उसका नंबर उसको आर पॉइंट से
डिनोट करने के बाद वो पॉइंट आ जाएगा √5 विथ सेंटर ओ क्यू। देखो, with center O and OQ as a radius, draw an arc intersecting line L in the intersection in the point R. OR is equal to √5 on the number line L. The point R represents the number √5. Point R number √5. Now show the number under root of 7 on a number line. Draw a number line L. Show the number √5 on this number line. वो जैसे पहले एग्जांपल में हमने √5 डिनोट किया था वैसा ही इधर करके रखा है। द पॉइंट R रिप्रेजेंट द नंबर √5. Draw segment RS perpendicular to line L. RS perpendicular to line L with a unit distance. So unit distance. So RS unit distance. With center O, the radius OS, drawn an arc OS. तो आर्क डिनोट we denote arc as OS and it is named as point T, and point T will represent the number √6. Point T is represent the number √6. Draw segment TU perpendicular to line L. Draw segment TU as a TU is a one unit with a center O and radius OU. With center O and radius OU. तो रेडियस OU को लाइन L पे बाइसेक्ट करने का, तो ये पॉइंट आ जाएगा V, और V को पॉइंट डिनोट एज √7. So the number √7 is denoted by V. The procedure is some little bit harder, but we can denote it easily with this procedure. तो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 ख़त्म हो गया। अब वीडियो कैसे लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।